Good afternoon, friends. Important judgment from Kerala High Court. Global plastowares. What happened? You got so-called notice under Section 73 non-fraud case. You have paid the tax along with interest within 30 days of issuance of so-called notice. 73 non-fraud. Whether penalty can be levied. This is the big question, right? So we have to be very, very careful and we have to listen very carefully. For this, we need to understand the provision as well. 73 subsection 1 talks about issuance of so-called notice, non-fraud cases, non-payment, short payment, wrongly availed credit or utilized erroneous refund within 3 years from the due date of furnishing annual return. 73 subsection 3, for subsequent period, a statement can be issued in lieu of a so-called notice. 73 subsection 5, if a person chargeable to tax and he paid the tax before issuance of so-called notice, self-ascertained and paid by him, or it is ascertained by proper officer and paid by the taxable person, then 73 subsection 6 says in such cases no notice need to be issued, so-called notice. 73(8) says that if so-called notice got issued to a person chargeable to tax under section 73 subsection 1 or subsection 3 and within 30 days he pays the tax along with interest, then no penalty and all proceedings pertaining to that notice shall be deemed concluded. यहाँ तक 73 subsection 8 की बात यह है कि अगर आपने within 30 days अब so called notice अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया 73 नॉन फ्रॉड तो पेनाल्टी नहीं लगेगी. परफेक्ट. यहां तक तो बात हम सबको समझ में आ रही है. 73 सबसेक्शन 9 बोलता है कि अगर आपने 30 डेज विदिन 30 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस नहीं पे किया तो पेनाल्टी लगेगी हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 20,000 CGST एंड SGST हायर ऑफ 2. अब 73 सबसेक्शन 11 को समझना बहुत जरूरी है. 73 subsection 11 start with a non-obstante clause. Notwithstanding whatever contained in 73 subsection 6 or subsection 8. Subsection 6 में क्या था? Just to recall कि अगर आपने बिफोर issuance of so-called notice अगर टैक्स पे कर दिया है along with interest तो नोटिस इशू नहीं होगी. और 8 में क्या था कि आपने अगर टैक्स का अमाउंट जो भी आपने पे किया है, इंटरेस्ट जो भी पे किया है और विदिन 30 डेज अब सो कॉज नोटिस अगर आपने पे कर दिया है तो नो पेनाल्टी एंड सेल बी डीम्ड, जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है सेल बी डीम्ड कंक्लूडेड. ओवरराइट कर दिया इसने 73 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 8 को. अब ये बोलता है इन केस वेयर यू हैव कलेक्टेड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एनी टैक्स and you fails to pay within 30 days from the due date of payment of tax. तो 73 सबसेक्शन 9 में जो पेनाल्टी का प्रोविजन है ना, हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 20,000 विच एवर इज हायर, वो आपके ऊपर लग जाएगी. सो डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट. ये what is the interpretation?
See, when I look at 73 subsection 5, subsection 6, subsection 8, it is talking about person chargeable to tax. Under section 73, subsection 1 or subsection 3, chargeable to tax means GST is on accrual basis. Liability is on supplier. Irrespective of fact whether you collected or not collected. ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी में लाइबिलिटी एक्रूअल है, फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मली अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अंडर रिवर्स चार्ज. सो यानी अगर आप सप्लायर हैं, यू आर चार्जेबल टू टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आपने कलेक्ट किया या नहीं किया. So 73 subsection 1, subsection 3 is talking about notice उन बंदों को दी जाएगी, so called notice. And this reference is being drawn in 73 subsection 5, subsection 6, subsection 8. Reference डाला गया है. यानी जो आपकी accrual liability थी, आपको अगर नोटिस इशू कर दिया गया फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अगर आपने वो विद इन 30 डेज पे कर दिया तो नो पेनाल्टी नहीं लगेगी. एंड ऑल प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड कंक्लूडेड. लेकिन 73 सबसेक्शन 11 इज क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन, इट्स सेपरेट प्रोविजन. फर्स्ट ओवरराइडिंग 73 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 8. यानी अभी उसकी बात नहीं कर रहा पर्सन चार्जेबल टू टैक्स. अब तो ये कहता है कि अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या कोई टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया है और विद इन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अगर पे नहीं किया, सो प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पर्सन चार्जेबल टू टैक्स वर्सेस अमाउंट कलेक्टेड एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स. यानी अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपके ऊपर 73 सबसेक्शन 9 की पेनाल्टी लग जाएगी. जाग जाइए. सो नो पेनाल्टी प्रोविजन ओनली व्हेन यू आर चार्जेबल टू टैक्स. बट आपने कलेक्ट नहीं किया था, वहां पे आप टैक्स विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज पे कर रहे हैं. अब सो कॉज नोटिस 73 subsection 11 is departure and overriding 73 subsection 6 and subsection 8. जहां भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कलेक्ट किया है या टैक्स कोई अमाउंट एज ए टैक्स कलेक्ट किया है और विद इन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आपने अगर नहीं जमा कराया, तो 73 सबसेक्शन 9 पेनाल्टी हायर ऑफ 10% of tax or 20,000 rupees. This is what the judgment of Honorable Kerala High Court. अब इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स है क्या, राइट? इस सेक्शन में तो कोई रेफरेंस डाला नहीं. When you go to section 75 subsection 12 explanation, they are saying अगर आपने GSTR 1 में कोई अमाउंट फर्निश किया है बट 3B में नहीं दिखाया, उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे. यानी 1 में दिखाया बट 3B में नहीं दिखाया, हम उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे. एंड एनी अमाउंट इज बीइंग कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स. तो आपको एक और बता दूं सेक्शन 76 का प्रोविजन, प्लीज बी केयरफुल, कि आपको ये जमा कराना पड़ेगा. यू हैव टू, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट for issuance of so-called notice where you are collecting any amount in the name of tax but that is not real tax. Then no time limit for issuance of so-called notice, and order should be passed within 1 year from the so-called notice. So this Kerala High Court judgment, global
plasterwares. Very, very important and interesting. So be careful, and thanks for watching. A detailed newsletter on this particular judgment is given in a description box. You may download the same and go through for each of your reference. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.